Hello students. Now we discuss about the chemical changes in everyday life. We find many examples of chemical changes in our surrounding, body, home and laboratory. Let us see some chemical changes for which word and chemical equation can be written easily. Now first we discuss about the natural chemical changes. So some changes occur naturally. For example, process of respiration. Respiration is a continuously occurring biological process. In this process, we inhale the air and exhale carbon dioxide and water vapor. After an in-depth study, it is learned that glucose in the cells react with oxygen in the inhaled air to form carbon dioxide and water. So the word equation and the chemical equation of this chemical reaction are as follows. Glucose plus oxygen gives carbon dioxide plus water. So what is the chemical equation for that reaction? That is C6H12O6 plus oxygen. It gives CO2 plus H2. So this is the chemical reaction. Now see, this is the chemical equations C6H12O6. This is the molecular formula of glucose. Then for oxygen we write O2. Then arrow is indicating means there is a chemical reaction between glucose and oxygen. So there is a formation of carbon dioxide plus water. So this process is called as the respiration. Now we do one activity. Take some freshly prepared lime water in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें क्या लेना है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. उसका फॉर्मूला क्या है? CaOH twice, that is calcium hydroxide. Keep on blowing in it with a blow tube. What is seen after some time? तो आपने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने क्या लिया? लाइम वाटर. फिर उसमें क्या डाला आपने? स्ट्रॉ रखा या ब्लोइंग ट्यूब रखी. और फिर क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ माउथ यू हैव टू ब्लो द एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब. तो क्या दिखाई देगा? आफ्टर सम मोर टाइम यू विल फाइंड दैट अ वाइट इंसुलेबल सॉलिड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब. सबसे पहले तो जो लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. वाई इट बिकम्स मिल्की? बिकॉज व्हेन CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की. जब हम एयर ब्लो करेंगे तो उस एयर में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और उसके कारण क्या होगा? देर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और उसके कारण क्या तैयार होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. And if we after observe after some time, so there is a settles the white insoluble solid at the bottom of the test tube. So this is a precipitate of calcium carbonate. यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होंगी? पाउडर फॉर्म होगी. So see what is the chemical reaction? Carbon dioxide plus calcium hydroxide gives calcium carbonate plus water. Okay, so what is the chemical reaction? CO2. Chemical equation क्या आएगा इसके लिए? CO2 plus COH twice gives CaCO3 plus water, that is H2O. After that we discuss the next natural process which occur in plants. So that process is called as the photosynthesis. Now what is photosynthesis? We know that green plants perform photosynthesis in sunlight. So what is the equation for that? Word equation carbon dioxide plus water. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें क्या होती है? रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. तो क्या फॉर्म होगा? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन. So what is the reaction? Chemical reaction क्या है इसमें? CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2. Then after that we discuss about the man-made chemical changes. So we bring about many chemical changes for our use in everyday life. The chemical change that we saw in the first activity is used in the cold drink called soda lemon. It means that it is an useful man-made chemical change. So first
man-made chemical change, that is the combustion of fuel. Wood, coal, petrol or cooking gas are burned for getting energy. The common substance that burns in all this fuel is a carbon. तो इसमें सभी जो फ्यूल रहते हैं उसमें क्या रहता है, कार्बन रहता है. ड्यूरिंग द कंबस्शन प्रोसेस कार्बन किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन इन एयर, एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म. So common equation can be written for all these combustion process is as follows. So wood, coal, petrol or cooking gas contains carbon. So carbon plus oxygen gives carbon dioxide. And what is the chemical reaction? C plus O2 gives CO2, that is carbon dioxide. Then next man-made chemical change, that is the cleaning Shahabad tile with dilute hydrochloric acid. The chemical composition of Shahabad tile is mainly calcium carbonate. तो जो शाहाबाद टाइल है उसमें क्या रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट. During its cleaning with hydrochloric acid, the upper layer of the tile react with hydrochloric acid and 3 products are formed. जब टाइल को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अपर जो लेयर है उसमें क्या होती है, रिएक्शन होती है विथ एसिड और उसके कारण 3 प्रोडक्ट तैयार होते हैं. सो वन ऑफ देम इज कैल्शियम क्लोराइड विच बीइंग सोल्यूबल इन वाटर एंड गेट्स वॉश अवे विथ वाटर. द सेकंड प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. इट्स बबल मिक्स अप इन एयर, उसके जो बबल्स है वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं. और जो थर्ड प्रोडक्ट है दैट वाटर मिक्सेस विथ वाटर, तो वाटर फॉर्म होता है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है. सो द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज इज, सी there is a calcium carbonate plus hydrochloric acid gives calcium chloride plus carbon dioxide plus water. Then next reaction, that is the softening of hard water. तो कुछ जो वेल्स रहते हैं या ट्यूब वेल्स रहते हैं उसमें जो पानी है वो क्या रहता है, हार्ड रहता है. और ये जो उसका जो टेस्ट है वो भी अलग रहता है, ब्रैकिश टू टेस्ट, एंड डजेंट फॉर्म लैदर विथ सोप, यानी सोप के साथ भी वो झाग नहीं देता, उस पानी में झाग भी नहीं आता. जो सोप का जो झाग रहता है वो या जो उसको हम फ्रॉथ कहते हैं वो नहीं प्रोड्यूस होता. सो दिस इज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स द क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन डिजॉल्व्ड स्टेट. तो ये किस कारण होता है, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या रहता है, किसके सॉल्ट्स रहते हैं, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. सो टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर, अब ये जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए फिर क्या किया जाता है, सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एडेड टू इट. तो इसमें वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है. दिस रिजल्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ इंसोल्यूबल कार्बोनेट. प्रेसिपिटेट किसकी प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है उसमें, द रिजल्ट इन केमिकल रिएक्शन फॉर्म अ प्रेसिपिटेट ऑफ इंसोल्यूबल कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. As the dissolved salt of calcium and magnesium go out in the form of precipitate of the carbonate salt, water is softened. So what is the chemical reaction for this? That is calcium chloride plus sodium chloride gives calcium carbonate plus sodium chloride. Chemical equation क्या है, CaCl2 that is calcium chloride plus Na2CO3 sodium carbonate gives CaCO3 plus NaCl. So this is the chemical equation for the reaction. After that we saw the composition of matter changes during a chemical change, that new substance having different properties. When what this happens, when